ईरान सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी, शाम को अरब लीग में वापस आने की सऊदी दावत और इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात कायम होना, ये सब माजी के मुकाबले में मशरक़ वस्ता की एक मुख्तलिफ तस्वीर बनाते हैं। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से शाम, गजा और लेबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की तरफ भी इशारा कर रही हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अरब दुनिया की सियासत में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं आने वाले दिनों में, इस पर बात करते हैं वाइल अल-ज़याद से, जो कि मशरक़ वस्ता के उमूर के माहिर हैं। While thanks for joining us this morning. Now the relations between Iranians and Saudis are causing up somehow. Do you think efforts to end the war in Yemen would be fruitful now? And what are the issues the mediators are focusing to resolve now? Thank you for having me on. I think it remains to be seen whether these initial engagements will lead to a permanent peace deal in Yemen that all of us desire. Right now, the objectives of the Saudi government and its engagement with both Iran and the Houthi rebels in Yemen is to end the hostilities between the Saudi government and the Houthis, especially an end to the launching of rockets and drone attacks from the Houthis that have been targeting important Saudi infrastructure, including its oil infrastructure. The next phase would be cementing a peace deal between the warring Yemeni parties. And as you just saw, there's an announcement that the Yemeni coalition government, the one that is backed by Saudi Arabia, has agreed to an 8-month ceasefire with the Houthis. And most analysts really project this process will take a long time, probably years. And it'll be fraught with a lot of challenges because at the end of the day, even if the Saudis come to agreement with Iran and the Houthis, there is Yemeni disagreements about power sharing and the nature of the Yemeni state. वाइल हमें बता रहे थे कि अभी ये देखना बाकी है कि किस तरह से चीज़ें पैन आउट होती हैं और किस तरह से शेप अप होती हैं आगे जाके, लेकिन सऊदी और ईरान के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं और हौसियों के साथ इस वक्त जो सऊदी मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मेनली उस जारहियत को रोकने के लिए हैं या उस हॉस्टिलिटी को रोकने के लिए हैं जिस तरह से हौसियों की साइड से रॉकेट दागे जा रहे हैं सऊदी सरजमीन पे, और जिसमें मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे ऑयल तनसीबात हैं उन पे नुकसान हुआ है, उन पे जो रॉकेट गिरे हैं उनसे जो नुकसानात हुए हैं उसको रोकने के लिए है। और आने वाले दिनों में एक बेहतर पावर डील जो है वो बेहतर करने के लिए एक उस एफर्ट में और उस लिहाज से ये काम आगे चलेगा और उसी नहज पे ये मुज़ाकरात पहुँच के शायद शेप अप हो सकेंगे। और यमनी गवर्नमेंट जो भी बनेगी उनके आपस में किस तरह से अरेंजमेंट्स होंगे वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और ख़ास तौर पे यमन बाकी सारी चीज़ें बाहर वाले जो फैक्टर्स रहेंगे, सऊदी, ईरान या बाकी सारे प्लेयर्स अपनी जगह पे, लेकिन विद इन यमन क्या पावर अरेंजमेंट होगा हौथियों के साथ, ज़ैदियों के साथ। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट गवर्नमेंट एज वेल, जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसकी बेसिस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। While earlier Jordan, UAE, Tunisia and now Saudi is restoring ties with Syria, with like more and more Arab nations restoring relations with Bashar al-Assad and helping in ending his isolation. What kind of new Middle East you are foreseeing? What kind of new Middle East I'm foreseeing? I think we're seeing the same old Middle East, where unfortunately autocratic regimes are learning how to work with each other and making space for each other. But generally speaking, at the expense of reform, human rights, and democracy. And so in that sense, Syria, since the age of Hafiz al-Assad, the father of the current president, has been a troublemaker in the region and has really made a case for its importance as a potential spoiler and a destabilizer. You saw this in Lebanon, for example, during the civil war. And the region's autocrats care most about stability. That is their number one priority. And for them, and I do believe that many of them, even for them, were terribly troubled by the behavior of Bashar al-Assad during the civil war. But now I think their priority is to make sure that they stabilize their borders and their countries, which is why they're engaging with Assad.
वाइल का कहना है कि सबसे एक तो सिंगल मिड ईस्ट वो देख रहे हैं, एक वाहिद मशरक़ वस्ता, और ख़ास तौर पे उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है वो ये है कि आमिर जो है वो अपनी हुकूमतें, ऑटोक्रेटिक हुकूमतें जो है वो सिक्योर हो सकें और उनके इंटरेस्ट सिक्योर हो सकें, और उससे बढ़ के अगर ह्यूमन राइट्स वगैरह की हम बात करते हैं तो वो शायद इसमें उस तरह से शेप अप नहीं हो सकेंगे या उसकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। वेल, इन रीसेंट वीक्स इसराइल हैज स्टेप्ड अप अटैक्स ऑन गजा, लेबनान एंड सीरिया। हाउ सीरियस इज द थ्रेट, दिस वेरी थ्रेट टू द रीजनल पीस? Obviously, this violence is always troubling, but I have noticed that the Israeli response has been measured and has not led to a longer war with either Lebanon or even in Gaza. You saw the Israeli Defense Forces responded to the rocket attacks that came from Lebanon with targeted strikes, but we're not seeing the same long-term response that we saw in the past, and I think the government in Israel, Prime Minister Netanyahu, has a lot on his hand, given the domestic opposition to his efforts to reform the judiciary, and I think pressure from not only the U.S., but it seems from some of the Arab countries, Jordan, Egypt, and now with the UAE, since they have established relations with them. So it's worth watching, but I don't see it escalating more. वाइल का कहना है कि इसराइल का रिस्पांस जो है वो काफ़ी मेजर्ड रिस्पांस है, कैलकुलेटेड रिस्पांस है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो हुकूमत है इसराइल में, उसको लोकली जिस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है वो, उसके बावजूद जो बाहर जो एक्सटेंड कर रहे हैं वो जिस तरह से दूसरे मुल्कों में जिस तरह की एफर्ट्स, और ख़ास तौर पे जब हम जंग की बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन और कैलकुलेटेड सोल्यूशन वो शायद इससे निकालना चाह रहे हैं, और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन रही है वो इलाके के पीस के लिए ऑफ कोर्स खतरा हो सकता है। वाइल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। Thank you so much. थैंक यू।